The average of first 10 natural number. Okay, so what are natural numbers? The number which starts from 1 are known as the natural number. So 1, 2, 3 till 10 number you have to find out. There's a two ways. First of all, what is the formula of average? So average is what? Sum of all the numbers. So 1, 2 till 10 and divided by number of numbers. So you have 10 numbers is there. First n natural numbers का sum. So there's a formula of first n natural numbers is what? 1 plus 2 plus till n is given by n into n plus 1 by 2. So value of n is what? 10. So let's put in this 10 into 10 plus 1 is 11 divided by 2. So this was the formula and divide by 10 again. So 10 से 10 काट दीजिए. 11 by 2 is what? 5.5. Okay, so that is going to be your average. अगर आपको वैसे निकालना है कि एवरेज क्या होगा, so how many terms are there? 10 terms are there. Fine. तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो टोटल होता है और उसका जो एवरेज होगा वही बाकी नंबर्स का भी एवरेज होता है. सही है. अगर सीरीज के अंदर कांस्टेंट नंबर चल रहे हो तो या डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा हो तो 1 और 10 का टोटल कितना होता है? 11. सो डिवाइड बाय 2 करेंगे 5/5. किन्हीं भी दो नंबर्स का लास्ट एंड सेकंड लास्ट का टोटल लेंगे. So 2 plus 9 divided by 11, so it is again 11 and this is divided by 2, so this is 5.5. So these are the sets where things are constant, so you can easily find out the number. Okay, let's come to the next problem. The average of 9 observation was 9. Okay, that of the first of 5 being 10 and that of the last 5 being 8 means 9 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज इज 9 है एंड देन फर्स्ट 5 का जो एवरेज है दैट इज व्हाट 10 एंड जो लास्ट के 5 है उनका एवरेज 8 है. फाइन. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर. सो लेट्स मेक देयर 10 प्रॉब्लम्स नंबर्स आर देयर लाइक A1 A2 A3 whatever to that until A10. okay, whenever you have the kind of problem of average make sure कि आप बॉक्स का वेट निकाल पाओ. जैसे यहाँ पे उसने दो बॉक्स को डिवाइड किया, यहाँ से A5 कर दिया और देन फिर वापस A5 को रिपीट करवा के एक बॉक्स और स्टार्ट किया दैट लास्ट 5 का. सो लास्ट 5 का कितना लोगे? A6 से स्टार्ट करेगा, A6 A7 बट 9 नंबर्स है तो आपको 9 तक ही रोकना पड़ेगा. तो अगर 5 लास्ट 5 नंबर्स लेने हैं तो A5 से स्टार्ट करना पड़ेगा. सो A5 से लेके A9 तक का एक एवरेज लिया है और A1 से लेके A5 तक का एवरेज लिया है. इट मींस आपने A5 को दो बार यूज किया है लॉजिकली. फाइन. यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं. फर्स्ट वी आर हैविंग एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स. तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ 5 नंबर? A1 to A5 sum of this number divided by 5 and that is given to you is what? It is given to you is what? 10. तो sum of A1 to A5 is what? 50. नाउ A5 से लेके A9 तक का भी एवरेज आपको गिवन है. सो A5 टू A9 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू व्हाट? 8. सो A5 से A9 तक की जो टोटल है दैट इज 40. अगर आप इनको सम कर लेते हैं A1 से लेके A5 और A5 से लेके A9 तो आपको सम मिलेगा A1 प्लस A2 टिल A5. लेकिन एक बार फिर आपको A5 मिलेगा तो एक बार मैं उसको साइड में लिख दूं A6 से लेके A9 और उसका टोटल जो है सो 40 प्लस 50 इज व्हाट? 90. अगर मैं कहूँ A1 A2 A3 A4 A5 टिल A9 का टोटल कितना होगा तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशन का टोटल कितना दे रखा है? 9 एवरेज दे रखा है. तो यहाँ से A1 टिल A9 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 9. सो सम फ्रॉम A1 टू A9 कैन बी रिटन एज 81. फाइन. तो इसका टोटल कितना है? 81. और A5 का वैल्यू कितना आएगा? तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो इट इज 81 प्लस A5 इज इक्वल्स टू व्हाट? 90. तो A5 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9. ओके. आप चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो कि इस नंबर्स के अंदर हुआ क्या है. वैसे इन नंबर्स के अंदर ये हुआ है कि एलिगेशन अगर आपको पसंद है तो एक का एवरेज 10 था, दूसरे का एवरेज 8 था और फाइनल एवरेज 9 है. इसका मतलब ये जो नंबर है ये 1:1 के अंदर है. जितना पार्ट इसको मिलेगा उतना ही पार्ट इसको मिलेगा. इसका मतलब जो एवरेज या मैं कहूँ कि जो बीच वाला नंबर है उसका वैल्यू कितना होगा? उतना ही होगा जितना आपका एवरेज था. सो आंसर इज गोइंग टू बी 9. ओके. सो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं.
पर बेस नंबर ये इंपॉर्टेंट है कि यू आर हैविंग द वेट ऑफ द बॉक्स. The average of 10 numbers is 23, like in this question. तो जब भी average का question आता है, make sure that you are using this. The average of 10 number is 23. So 10 numbers or numbers are there and average is 23. So what is the weight of this box? Formula of average is what? Total number. मैं हमेशा ऐसे ही देखता हूँ कि किसी भी चीज का box का weight divided by number of numbers is 10 and average is given to you is what? 23. So weight of this box is what? 230. तो इस बॉक्स का जो वेट है वो 230 है. इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 4, एवरेज 23 है और सभी का नंबर को अगर 4 से इंक्रीज कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा. तो पहले एक बार मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं. 230 है प्रीवियसली वेट. नाउ 10 नंबर्स हैं, उनको सभी को अगर 4 से इंक्रीज कर दोगे तो सबका वेट कितना इंक्रीज हो जाएगा? 40 से इंक्रीज हो जाएगा. सो यू कैन से द न्यू एवरेज, लेट्स से एवरेज डैश is what? 230 plus 40, and again how many peoples are there? 10 peoples is there, so 270 divided by 10, so it is going to be 27. So 27 average हो जाएगा. You can also understand by the logical way what is average actually. Let us assume that there are 10 peoples are there in a class, and by average let's say 3 3 6 4 10 people are there and average is 23, so you can assume that each and everyone is having 23 rupees. Now in this question someone asks you that they are paying 4 rupees on average to each and everyone, so you can assume कि 4 rupees are paid to each student. अगर सभी को आपने 4 rupees दे दिए हैं तो obviously yes, on average सबकी पॉकेट में कितना हो जाएगा? 23 plus 4 is going to be 27 rupees. So 27 rupees now you are having in a pocket of each person. So option is what? C is going to be correct. So average is all about that you can assume that on average is what? So each student or each people are having what kind of money. So by that you can easily solve this kind of problems. The average age of 3 boys is 15 years. Okay, let us zoom again. I'm just starting with the basic questions. So let's say 3 people are ABC and their average is 15. So weight of this box, or you can say sum of all the people. तो 15 अगर उनका एवरेज है, 3 लोग हैं, तो इसका मतलब तीनों का मिला के टोटल कितना हो जाएगा? is 45 and the ages are in proportion 3:5:7. okay, so हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं what is ratio proportion. आप वीडियोस देख सकते हैं. 3:5:7, so this is what 3k, this is what 5k, this is what 7k. रेशियोज को आप एक कांस्टेंट के अंदर डिवाइड कर लीजिए और ये किसका वैल्यू है? ए का. ये किसका है? बी का. ये सी का. सो यहाँ पे पुट कर दें वैल्यूज. सो लेट्स पुट अप द वैल्यूज. 3k plus 5k plus 7k and the total is given to you as 45. 3 plus 5 is 8, 8 plus 7 is 15k is equals to 45. So value of k is what? 3. Now what is the age of the youngest boy? Now who is the youngest boy? 3k is obviously youngest boy and value of k is what? 3. So what? 3 into 3 is what? 9. So value of this youngest boy is going to be 9 years. Okay. The average of 9 observation was what? 9. What was the first of 5 being 10 and the last of 5 being 8? I think we have already done this problem. What was the fifth observation? We have already done this. A batsman makes a score of 64 runs in the 16th inning. Okay, so till 15th inning we don't know the runs, but in the particular 16th inning he scored 64 runs and thus increases the average by 3. So again, let's say previously in 15 matches the average of or the average was A. Okay, अगर एवरेज A था तो इस पूरे बॉक्स का टोटल कितना होगा? 15 आपका टोटल पीपल या इनिंग्स थी. ए इसका एवरेज है तो पहले इसका जो टोटल था वो 15 ए था. नाउ इस बॉक्स का टोटल हो गया 64. तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो हाउ मेनी इनिंग्स आर देयर? एक्चुअली राइट नाउ दिस 16 innings are there. And what happened now? Actually what happened now, the average is increased by 3. So what was the previous average? It was A, so now it is increased by 3, so now it becomes A plus 3. So this is what? 15 times of A plus 64 is equals to 16A plus 48. Now this is
there and this will be there. So your A is going to be what? 64 minus 48. So 64 minus 48 is what? 6541. So previously again the average was what? 16. Now you can say that this 64 runs in 16 innings. So what was the average after is the 16th inning? Actually, what is asked the average after 16 innings. So 16 was my previous average. Now increase in average is what? By 3. So now your average is going to be what? 16 plus 3. So answer is going to be 19th. Okay. So these are few important question, or you can say basic question. You have to always make sure that you are using this total of box. अगर आप इस box को total weight निकाल लेते हैं, then you can do each and everything. There is nothing in the questions of average. The average marks of Suresh in 10 papers are 80. So again, 10 papers, Suresh is having 80 marks. So 10 papers, average is 80. So weight of this box is going to be what? 800. If the highest and the lowest are not considered, okay, so whatever these highest and lowest are not considered, the average is going to be 81. So after highest and lowest is not considered, then what amount of people are less or rest are there? 8 people, and then average is going to be 81. I'm just making a diagram. Let's say these two peoples are of highest and this one is the lowest. So this diagram now conclude into this particular diagram. 81 जो है वो इन 8 लोगों का एवरेज है और इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट जो है वो डिफरेंट है. अगर ये लोग भी कन्वर्ट या कंसिडर करे जाएंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 800. सो आई कैन से 8 into 81 plus highest plus lowest equals to 800. This is what? 648, and that is given to you. The highest score is 92. So I think 92 plus lowest equals to 800. 8 plus 2 is what? 10. This is 5. 5 plus 2 is 7. 92. So 8 plus 2, 5. 9 plus 5 is 40. This is what? 740 plus lowest equals to 800. So value of lowest is going to be what? 60. So lowest mark was 60 and the highest mark was 92. So again I'm using the same thing. Make sure that you are using this particular box weight. अगर आप ऐसा कर लेते हो तो I am guaranteeing you that आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. The average weight of a man is increased by 1.5 kilogram. So 8 men are there. I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this one is 10. So let's say average is again what? Average was A, and average weight of a 8 man is increased by 1.5 kilogram. So I think 3, 3, 6. I think people are more actually. This is not there. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 person. The average of 8 men is 8 men are there and increased by 1.5 kilogram when one of the men who weighs 65 kilogram is replaced by a new man. Okay, let us assume this man is of 65 kilogram. ये जो है वो 65 किलोग्राम का है. तो ये जैसे ही आप चला जाता है एक नया पर्सन आता है. लेट्स से उसका वेट कितना है? n मान लेते हैं. तो 8 पीपल आर देयर. तो पहले तो सबसे पहले इस बॉक्स का वेट कितना है? 8 है. उसमें से एक 65 किलोग्राम वाला चला जाता है और एक नया किलोग्राम वाला n वेट लेके नया आता है. और इसके आने के बाद जो एवरेज है दैट वाज इंक्रीज बाय व्हाट? 1.5 किलोग्राम. तो अगर 1.5 किलोग्राम से इंक्रीज हो गया वेट तो एज वी डिड इन प्रीवियस क्वेश्चन अगेन द पीपल आर व्हाट? अगेन द पीपल आर सेम एज दे वाज 8. स्टार्टिंग में एवरेज कितना था? A, और अब वो कितने से इंक्रीज हुआ है? 1.5 से. तो नाउ 8A minus 65 plus n is equals to 8A. 15 8s are 20, so it is 12. 8A से 8A काट दीजिए. So नया जो पर्सन है उसका वेट कितना हो जाएगा? 65 plus 12 and that is going to be what? 77. तो जो नया इंसान आया था उसका वेट कितना था? 77. Okay.
ये एक मेथड होता है जो आप इजिली कर सकते हो. देयर इज अनदर मेथड जो आप शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो, तो वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हाट अमाउंट ऑफ पर्सन इज गोइंग और कमिंग डजंट मैटर. जिस अमाउंट का पर्सन जाता है आप अज्यूम कर लो कि उतने ही अमाउंट का पर्सन आपका वापस आया है. तो मैंने वापस अज्यूम कर लिया कि 65 का ही वापस आया था. और यहाँ पे जितना भी वो स्टार्टिंग में अगर एक्स्ट्रा लाया होगा तो आपका एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, अगर कम लाया होगा तो आपका इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा. यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन दिस वे कि अगर आप 65 लेके गए हो, ठीक है, या मैं आपसे कहूँ कि एक सिस्टम था, एक बर्तन था जिसमें से आपने कुछ पानी बाहर निकाल लिया. किसी ने कहा कि वापस जब दूसरा पानी डाला था तो उसका जो एवरेज का मतलब जो हाइट थी वो बढ़ गई थी. तो अगर हाइट बढ़ गई है तो ये जो आया है नया, इट वाज डेफिनेटली हायर, हैविंग अ हायर वैल्यू दिस द प्रीवियस वन. अगर इसको वापस दूसरे वाले को डालने से अगर इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता तो ऑब्वियसली इट इज हैविंग अ लेस वैल्यू इन कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस वन. फाइन. इस वाले के आने से 65 को जैसे ही आप आते हो तो आपने इंक्रीज कर दिया वैल्यू. तो इंक्रीज कर दिया तो आप अज्यूम कर लीजिए कि आप 65 ही लेके आपने उसको वापस एंटर करवा दिया. और एंटर करवा दिया उसके बाद क्या हुआ, जो भी उसके पास पैसा बचा था वो आपने इन 8 लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाया. जैसे आपने इन 8 लोगों के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया, सबने बताया कि हमको 1 रुपीज 50 पैसा और मिला है. तो ये 1 रुपीज 50 पैसा कितने लोगों को मिला है? 8 लोगों को मिला है. इसका मतलब जो बाहर पैसा छोड़ के आया था दैट वाज व्हाट, 12. ओके, 1.5 रुपीज 8 लोगों को मिला है, तो बाहर जितना पैसा छोड़ के आया था दैट वाज 12. 65 ऑलरेडी अंदर ले जा चुका है, 12 बाहर छोड़ के आया था. तो इसका मतलब इसका ओरिजिनल वेट कितना था? इट वाज 77 किलोग्राम. ओके, तो आप यहाँ से ऐसे पता करोगे. कई बार यहाँ पे समटाइम इट विल बी डिक्रीज, समटाइम इट विल बी इंक्रीज. सो आपको समझना पड़ेगा. अगर डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू था, अगर मैं कहूँ कि इसके आने की वजह से सबका एवरेज 1.5 से कम हो गया है, तो आप अज्यूम तो यही करना कि 65 लेके ही गया था. देन अगर डिक्रीज हुआ है तो आप कहोगे 65 माइनस 12, तो ये 53 लेके आया था. और अगर ऐसा इंक्रीज हुआ है तो यू हैव टू इंक्रीज दिस वैल्यू and just sum this by 12 and you will get the answer. Okay, so whenever these type of questions are there, make sure that you are using this trick. A number x equals to 80% of the average of 5, 7 and 14. So x is equals to, let's find out the average of 5, 7 and 14. So what is the average of 5, 7 and 14? 7 plus 5 is 12, 12 plus 14 is what? 26, and divide by 3. And a number x, so x is what, is equals to 80% of this. So this is what, 4 by 5. So 4 6 are 24, 4 2 are 8 plus 10, so this is 15, and this is what, equals to x. And a number y, a number x is equals to 80% of the average of 5, 7, 14, and a number y. So number y is also there, sorry. So a number x is equals to 80% of the average of 5 plus 7 plus 14 plus y and divided by 4. If the average of x and y is 24, so x plus y divided by 2 is equals to 24. So x plus y is equals to 52. This is what 4, this is what 5. 4 से 4 काट दीजिए. So this is what x और 5 को इससे मल्टीप्लाई करा दें. So this is 5x equals to 5 plus 7 plus 14 plus y, and you can put the value y is equals to what, 52 minus x. So this is 5x equals to 7 plus 5 is what, 12, 12 plus 14 is what, 26. Y is 52 minus x, so this is what, 6x equals to 26 plus 52. 6x equals to 6 plus 2 is 8, 5 plus 2 is what, 7. So your x is going to be 78 by 6, or you can say this is what, 39 by 3. What is the value of y? So in this equation just put the value of y
and you will get the answer. Okay, let's come to the next problem. The average weight of 16 boy in a class is 15.25. So there's a class of 16 boys and the average is what? 50.25. And the remaining 8 boys is, and there's another class you can say, and there are 8 boys and they are having average is what? 45.15. Find the average weight of all the boys. Let's say ki the partition between these two classes is removed. So now what should be the total average? How to find out this? Let's find out the weight of this box. Let's find out the weight of this box and divide by what? 16 plus 8, 24. So let's start. 16 into 50.25 plus 8 into 45.15 and divided by what? 16 plus 8 is 24. Now 16 plus 8 is 24. In this question you can say that इसको आप सेपरेट करके भी कर सकते हो. कैसे? आप 24 को 16 into 15.25 and 18, तो जो 24 पूरे के नीचे है तो फर्दर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 16 into 15.25 divided by 24 plus 8 into 45.15 divided by 24. तो हो सकता है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए. डिवाइड बाय 3, 8 1 is 8 divided by 3. So this is what? 100.5 divided by 3 and this is, इसको आप 3 को रहने दीजिए क्योंकि 3 आपका एलसीएम बन जाएगा. So this is 8 3s are simply 45.15 divided by 3. So now 3 is what? LCM. Just sum up the number. 45 is what? 145.5 and this is going to be 0.65. Now you can deduct this. So it has 3 4s are 12, 3 8s are 24, 3 5s are 15, 3 5s are 15. So 48.55 is going to be your average. So जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दो सिस्टम्स आता है तो उसके अंदर आप क्या करोगे? तो आप सबसे पहले इसका वेट निकालोगे, इसका वेट निकालोगे, इसका टोटल वेट जो आएगा उसमें जितने भी प्रीवियसली जितने लोग थे उन नंबर्स का आप डिवाइड लगा दीजिए एंड देन यू विल गेट द पर्टिकुलर आंसर. बट दैट इज ऑलवेज श्योर कि जो नंबर होगा वो इसी रेशियो के अंदर चलेगा. ठीक है, आई विल टेल यू इन द लेटर ऑन पार्ट मॉडरेट क्वेश्चंस. ओके.